Hello, are we live? Are we live? Hello, 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 hello. Hello? Yes, so we are live. We are live. ऑलराइट दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में, वेयर वी आर डेवलपिंग आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो वेबसाइट। और हमने एमवीपी मॉडल अपनाया था। एंड yesterday we implemented our third feature, terminal like actions. Although while ending the stream, मैंने क्या किया था, इन तीनों फंक्शन इन तीनों फंक्शनैलिटीज के लिए अलग अलग फंक्शन बना के अलग अलग फाइल्स में डाल दिए थे। एंड फॉर सम रीजन वी वर गेटिंग एरर इन एरो डाउन की, राइट? तो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली, राइट? तो पहले लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इशू आर वी गेटिंग। यू यहाँ तक सही है। इफ वी प्रेस अप की वी गेट यू विच इज राइट। इफ वी प्रेस डाउन की वी कम बैक, सही है। आर दबा रहे हैं, सही है यहाँ तक, राइट? एस डी इट्स राइट। बट एरर आ रहा था कहाँ पे, जब हम दबा रहे थे हेलो पे चले गए थे एंड वी ट्राई टू कम बैक बट नहीं आ रहा। तो इसका रीजन आई फिगर्ड आउट क्या है। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे पहुंच जाते हैं हम हेलो पे, तो हमारा कमांड इंडेक्स का वैल्यू हो जाता है 0, राइट? एंड हमने इस कंडीशन में कमांड इंडेक्स का एंड दे रखा है। तो इफ कमांड इंडेक्स इज 0 दिस ऑल टर्न्स टू फॉल्स और ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। सो दिस वाज द रीजन, यू नो, कि ये रन नहीं हो रहा था एज पर दी एक्सपेक्टेशन, बेसिकली अ बग। So what I did, what we can do is we can do this and now this will run, ठीक है? So if we close this, refresh it, hello, how are you? Yep, up, 0, up, it's working fine, and now it's working fine, right? But one another thing of what we can do is बेसिकली मेरे को ये चेक करना है कि ये एक नंबर होना चाहिए, राइट? और 0 से छोटा तो वो हो ही नहीं सकता कैसे भी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर आपको जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट पता है तो हम यहाँ पे इस nan कर सकते हैं, राइट? इट विल चेक इफ दिस इज अ नंबर और नॉट। इफ दिस विल बी अ नंबर इट विल रिटर्न ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। इफ दिस विल बी अ नंबर इट विल रिटर्न फॉल्स, एल्स इट विल रिटर्न ट्रू, बिकॉज इज नैन चेक कर रहा है, राइट? तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे ये, एंड आई गेस दिस शुड बी फाइन। लेट मी रिफ्रेश इट, लेट मी डिलीट इट। हेलो, हेल्प अबाउट, up, and if I try to come down, yep, this is working absolutely fine. ASD correct. So I believe this is right. तो इसको हम क्विकली पुश कर देते हैं, एक बार पैकेज जेसन में देख लेते हैं अपना क्या पैकेज चल रहा है। 0.3.3, विल क्विकली डू दिस।
macOS portfolio npm version 0.3.4 because we just fixed the bug, right? ये जल्दी से हो. So we are gonna start with fourth feature, terminal title bar button, जहाँ पे हम इन तीन बटन्स की फंक्शनैलिटी को वो करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, we'll try to implement it, right? हाँ, तो macOS portfolio updated. Yep. So let's quickly push it. Let's see macOS MVP03. हाँ, bug fix. So let's quickly do features.md. ये तो ऑब्वियस है, एरो डाउन की इन सब में डालते हैं. Put different functionalities in different files. Fix a bug on arrow down command index in if condition. और बाकी का तो I guess pretty much self-explanatory है. And we are gonna quickly push it. We are gonna merge it to the main. Bug fix आ गया, right? We are gonna quickly merge it to main. Bug fix. Create pull request. Open merge pull request. Confirm merge. Right. And we'll go back to code. We'll create another branch. macOS MVP04. Basically, we'll start development of a fourth functionality from this file. Now let's quickly pull it here. Git fetch all. Git branch checkout macOS MVP04. Okay, what did I miss here? I believe this is not going to the word. Branch extra लिख दिया था. Git branch, not you. Get branch all. Yep, looks good to me. And if I'm not wrong, yeah, we are at the right place. So from here we are gonna start implementing our fourth MVP feature, terminal title bar button. तो इसको कर देंगे हम quickly close, इसको भी कर देंगे close, ये भी close, ये भी close, and ये भी close, right? And we'll go to terminal body because okay, not terminal body. Terminal body में तो एक बहुत ही simple सा layout है. It should be terminal title. Yup. See, this is where we have implemented our three different functions, right? So let's start with use client and
प्रेस एंटर। तो रेड बटन से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो रेड बटन पे इफ समवन क्लिक्स, ये जो पूरा हमारा टर्मिनल है दिस शुड क्लोज एंड एवरीथिंग इन सेशन स्टोरेज शुड आल्सो गेट वाइप्ड आउट। दो फंक्शन चीजें का ध्यान रखना है, राइट। तो ऑन क्लिक, सबसे पहले ऑन क्लिक, and we don't need any such event here क्योंकि obviously we know कहाँ क्लिक हुआ है, राइट। console.log just to see close div click। yep, तो cool। now सबसे पहले we go to tailwind css cursor। I need this। तो ये चाहिए सबसे पहले तो because I want it to be here, control D। राइट, राइट। तो जब ये होगा क्लिक तो ये पूरा टर्मिनल शुड गो अवे, राइट। तो व्हाट इफ आई गिव बैकग्राउंड लाइन 300 this a id equals to terminal and I do a document dot get element by id terminal because there will be just one terminal and I say remove, कॉल कर दूं अगर, तो क्या होगा, लेट्स सी। ओके, तो आई बिलीव सिर्फ टाइटल डिलीट हुआ है इससे, सिर्फ टाइटल गया है एंड yes, id should be here, not there। let me quickly cut, go here, is save, refresh। राइट, तो हमारा ये फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो गया। id terminal body, there's only just one body। हाँ, करेक्ट करेक्ट, क्लास नेम्स तो बहुत सारे होंगे। give me create element, get element by id, create element, get element by id, get terminal body। Yeah, looks good to me। तो आई बिलीव हमारा पहला सब फीचर has been implemented, right। so without any wastage we are gonna push it to the GitHub, right। npm, अब सवाल ये है npm ऐड करूं या नहीं, वर्जन बेसिकली। ओके ओके, सॉरी आई गॉट फॉरगॉट वन मोर थिंग, सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। ऑल थ्री सेशन स्टोरेजेस हमारे जो भी थे, कमांड इंडेक्स
history, current command, if any, right? अभी भूल जाता तो हो जाती ना बस. Let's quickly go there. क्या error आ गया? Iteration error का बहुत लफड़ा है. So if we close this, yeah, this is working, and let's quickly just update the npm as well ताकि बाद में confusion ना हो. 0.4 point, but 4 is like a major feature, right? Let it be. इसको क्या कहते हैं? इस बटन को क्या कहते हैं? इस बटन को क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोज बटन, क्लोज बटन implemented for features. क्लोज बटन implemented. I believe हाँ, चलो सही जगह गया है. लेट्स सी. हाँ, है ना. अब एक सेकंड दोस्तों, ये क्या आ रहा है मेरे को? ठीक है. इसके बाद द सेकंड वन इज मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज. So we'll start with maximize because I believe this will be easier again. Uh, so again, we'll start with this document.getElement terminal. और इसका मुझे करना होगा क्लास से, आई मीन हाइट एंड विड्थ चेंज करना होगा, राइट? तो इफ आई जस्ट रिफ्रेश इट, तो जब भी यूजर इसे मैक्सिमाइज करेगा तो क्या एग्जैक्टली होना चाहिए? ये यहाँ कॉर्नर, वो कॉर्नर वहाँ, वो कॉर्नर वहाँ, वो कॉर्नर वहाँ, एंड इट शुड बिकम मैक्सिमम, राइट? तो वॉट एवर is available to him, height and width of its parent, it should become that, right? But the question is footer के भी तो, अच्छा, usually macOS, I've never worked with macOS. That's a big issue I'm facing because I don't have uh, how it behaves. So what we'll do, we'll just expand it to its parent site. Dot class list is equals to width full, height full. So Tailwind CSS will do its magic. Let me just refresh it. Yep, that worked. That actually worked, right? As you can see, this is actually working. But there's a catch. What if you just click it again, right? So we need to shrink it back because you see, right? Let me show you. Max हो गया, तो वो वापस ला गया और वापस वो उधर आ गया. तो ये चीज होनी चाहिए, राइट? So what we can do is we can start. We can actually add up. Uh, let's see. Um, max
size. We'll start with this, and तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, हम इसमें एक फ्लैग रखेंगे मैक्स साइज का, ठीक है। अगर मैक्स साइज हुआ तो दैट विल टेल अस कि वो मैक्सिमम साइज का है, एंड मान लो वो मैक्स साइज का नहीं हुआ तो हम वो फ्लैग उसी हिसाब से ऐड और रिमूव कर लेंगे, राइट। हाँ, तो डॉट क्लास लिस्ट dot contains max underscore size if const terminal is equals to अगर इसकी क्लास लिस्ट में मैक्स साइज होगा तो इसे console dot log it is max, else we'll say console dot log it is not max, but at the same time uh, terminal dot class list dot remove and at the same time we will add. This is a test. This is a test, right? Let's quickly test this. If this works fine. Elements. Now where is terminal? तो बॉडी हो गई, ये हो गया हमारा टर्मिनल। देखो मैक्स साइज है, लेट्स सी। मैक्स साइज हट गया एंड इट इज मैक्स। नाउ मैक्स साइज ऐड हो गया एंड इट इज नॉट मैक्स। कूल। तो हमें एटलीस्ट ये पता चलेगा कि मैक्स है या नहीं। अब एट द सेम टाइम वी नीड टू डू व्हाट, अगर वो मैक्स कंटेन करता है यानी कि वो मैक्सिमम साइज का है, तो इन दैट केस थिंक क्या कर सकते हैं, बट टर्मिनल डॉट क्लास लिस्ट में हमें ऐड करना होगा अगर वो मैक्स नहीं है तो विड्थ फुल, हाइट फुल। ओके शिट, तो क्या हुआ, सारी पुरानी क्लासेस चली गई, तो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। बट फिर मुझे पुराने वाली हाइट विड्थ हटानी पड़ेगी। वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। क्या एरर आया, स्पेस कैरेक्टर्स आर नॉट वैलिड, ऑफ कोर्स माय बैड। अगर वो मैक्स साइज कंटेन करता है यानी कि वो मैक्स है, उसको हटा दो, नहीं तो उसमें ऐड कर दो। वेरी सिंपल, राइट। लेट्स सी दिस वर्क। ओके, उसका साइज तो हो गया, लेकिन
इट्स नॉट सेंटर्ड एज यू कैन सी। हमें वो भी फिगर आउट करना होगा। पोजीशन टॉप लेफ्ट राइट करनी होगी। टर्मिनल कहाँ है? ये रहा टर्मिनल। तो इस टर्मिनल में क्या क्या है? ट्रांसलेट एक्स, ओके, ये सब प्रॉपर्टीज हमें हटानी होंगी। राइट, तो लेट मी क्विकली सी। क्या ट्रांसलेट वाले तो हमें ये हटाने पड़ेंगे स्टाइल्स। And I believe that that's pretty much it. We won't need to do anything else. And it will work like a magic. Yep. तो हमें ट्रांसलेट वाला एक चीज हटाना पड़ेगा। राइट, दोस्तों 1 मिनट दो, आई विल बी बैक इन। Yeah, I'm back. Sorry. Right. तो हाँ, what is the task is the what is the task is the हाँ, तो हमें वो भी हटाना है क्लास लिस्ट से। जब हम विड्थ में ऐड करेंगे तो वी विल हैव टू रिमूव 2 classes from the div. This one, क्लोज हो जाए कृपया, एंड ऑफ कोर्स ये दो रिमूव होंगी, ये दोनों ऐड होंगी। आई बिलीव दिस शुड वर्क फाइन एटलीस्ट फॉर मैक्सिमाइजिंग इट। करेक्ट, दिस वर्क्स मैजिक। नाउ कमिंग बैक टू ऑल दिस, हाँ, इसको उठा के हम यहाँ डालेंगे एंड वी आर गोना रिमूव, इनफैक्ट we are gonna remove these two, we are gonna add these two, but I believe there will be a conflict, there will be a conflict के दो दो वेट और हाइट दे दी हमने, राइट। तो हमने जो पहले की हाइट दे रखी मिनिमम हाइट एंड मिनिमम वेट, ये दोनों क्लासेस,
हमें इन्हें भी रिमूव करना होगा जब हम इन्हें ऐड कर रहे होंगे। तो we of course you can't do yep, बट एट द सेम टाइम जब हम ये करेंगे तो इन्हें ऐड कर देंगे एंड here we are sorted. And initially at the very start it won't be of max size, right? max size नहीं होगा उसका, ये भी एक बग था। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे it should go boom, correct, and when I click this, correct. Let me just quickly see if this is at least, not at least, I mean this should also work here, right, correctly in my terminal. तो मेरे को एक सेकंड दो, कैमरा सेट कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, तो if I press this, no conflict, no conflict, करेक्ट। तो हमारा ग्रीन बटन भी इम्प्लाई हो गया है। क्विकली पुश दिस टाइटल, push this with this comment and push. Now comes the minimize button अपना, जो कि होगा ये वाला। तो इसमें what are we gonna implement is, since I've never worked with macOS, what I'm thinking here is, let me just quickly think it out loud. uh, इस पूरे को नीचे भेजना और फिर उसके ऊपर व्हाट, जैसे विंडोज में होता है, जैसे ये है, इसके नीचे आपको दिख रहा है ये एक छोटा सा हुआ है, राइट। इफ आई मिनिमाइज दिस, ये हो जाता है। तो दिस आई बिलीव, I mean what I'm going to implement is, let me quickly tell you this. If I click this, तो ये जो body है this shrinks to the title, and whenever user clicks on this again it will just expand, right? I'm not sure how macOS exactly acts on this click, but this is what I'm going to implement. And let's say macOS किसी different तरीके से behave करता है, तो please let me know. We'll try to implement that as well, right? So on click, what are we gonna do is document.getElement by ID पूरा खींच लो, and not terminal. टर्मिनल बॉडी अपनी जो है, राइट। एक मिनट, अगर मैं इसे रिमूव कर दूंगा तो मेरा जो भी कमांड्स का डेटा है दैट विल आल्सो गो, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लस मैं उसको दोबारा से खींच के कैसे लेके आऊंगा, वो लेट मी कम टू यू। व्हाट आई एम थिंकिंग इज, लेट मी से इट आउट लाउड to see if it makes sense.
पहले मैं क्या सोच रहा था, जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो सिंपली मैं जो बॉडी वाला पार्ट है उसे डॉम से ही रिमूव कर दूंगा, रिमूव चाइल्ड करके। बट उसके साथ दिक्कत ये होगी, मान लो दोबारा क्लिक करेगा तो मुझे उसे खींच के लाने में, आई मीन टू जस्ट यू नो शो इट अगेन, इट विल बी अ वेरी हैवी टास्क, क्योंकि मेरे को सारा बुक फिर से लिखना पड़ेगा एंड आई हैव टू पुल इट। प्लस जो भी हमारा कमांड्स का डेटा होगा दैट विल आल्सो गो अवे, बट व्हेन यू मिनिमाइज द टर्मिनल इट डज नॉट गो अवे। सो instead what we can do is const body body this document dot get element by id, right, and the terminal body, if I'm not wrong, there's a property, okay, there's no such, overflow by is auto, that means this would be scrollable, height is 92.5%. What I'm thinking now is we'll just decrease the height of this element. So uh, we'll it's implemented in similar way. We'll see if there's a property minimize or something. और उसकी उसी हिसाब से we will change. तो terminal body में it should be minimized. तो starting में it won't be minimized. Minimize. अगर minimized होगा तो उसे छोटा कर देंगे, else we will just right. So let's start. It is not minimized. टर्मिनल बॉडी, अगर मिनिमाइज है तो यानी कि हमें रिमूव, हाँ, अगर मिनिमाइज नहीं है तो स्टार्ट, सबसे पहले तो उसे मिनिमाइज करेंगे। विड्थ हम नहीं छेड़ेंगे उसकी, we'll let width whatever that is, we just have to deal with height. हाइट हम उसकी कर देंगे 0, एंड we'll remove height का जो ये 92.5% वाला प्रॉपर्टी है। अरे यार, है ना, हाइट 0 ऐड कर दिया, 92.5 रिमूव कर दिया, एंड वी आर गोना रिमूव this property overflow by auto, and we are gonna add shit. We are gonna add another property overflow by hidden. यही होती है ना ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। हिडन, राइट, हाइट 0 ओवरफ्लो बाय हिडन, ये रिमूव और इसको रहने देंगे ऐसे ही। At the same time, we will remove this. We are gonna remove this, and we are gonna remove height 0 property, and we are gonna add height 92.5% square bracket, and we are gonna add this property as well, and we are gonna remove this property. So let's quickly see if this works as per the expectation. Minimize,
Okay, and maximize, minimize. Cool. ये एक सेकेंड. हाँ सही है, सही है. एक कुछ कमांड है जो गड़बड़ कर रही है एंड दैट इज बॉटम, सॉरी, पैडिंग बॉटम 5. तो वी आर गोना just remove this command as well, and we are gonna add this command as well. Right, this works great, this works great. uh, yep. Now I have to check one thing, one quick thing. हेल्प मैंने लिखा, मैंने मिनिमाइज कर दिया, मैंने मैक्सिमाइज किया. ओके, ओके, राइट, दैट्स ग्रेट. व्हाट एवर सेकंड वाज, मान लो ये यहाँ पे ये है, मैंने हेल्प लिखा एंड मान लो यूजर ने मिनिमाइज किया एंड ही राइट समथिंग, तो वो ऐसा ना हो कि वो कंटिन्यूसली जा रहा है, इट शुड नॉट गो. तो वो अपने आप ही फोकस लूज कर देता है, इनपुट टैग हमारा, तो इट वर्क जस्ट फाइन. तो आई बिलीव ये बटन भी इम्प्लीमेंट हो गया है प्रॉपरली, राइट, विच इज ग्रेट. आई फील ग्रेट. यप. तो लेट्स सी, अपना फीचर में जाते हैं. टर्मिनल टाइटल बार आर इम्प्लीमेंटेड. ओके, so let's quickly just delete this, save this, freeze all changes, commit and push. Hmm, 4. तो इट्स ग्रेट दोस्तों. आज तो हमने काफी जल्दी अचीव कर लिया अपना गोल आज का. दैट्स ग्रेट. And we are gonna just quickly compare and make a pull request. अरे यार, don't tell me I forgot to do the npm version. पुल रिक्वेस्ट ओपन ना किया मैंने, नहीं किया. That's great, friends. Yeah, compare and pull request. मेन सही चल रहा है ना.
कूल। आई बिलीव दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमारा बहुत जल्दी हो गया, आई बिलीव हार्डली 40 मिनट्स और 45 मिनट्स आई बिलीव हुआ होगा, है ना। तो ये 45 मिनट्स एग्जैक्ट, राइट। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। लेट्स चिल अ लिटिल टुडे, वी अचीव्ड आवर फंक्शनैलिटी वे टू अर्ली, इन वे टू सून एज पर द एक्सपेक्ट एज compared टू एक्सपेक्टेशंस, राइट। कल फुटर जूम इफेक्ट, बेसिकली पूरा फुटर ही हमें इम्प्लीमेंट करना होगा जीरो से। तो यहाँ पर पन्ना पूरा फुटर आएगा, तो उसे करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल, and then we will implement फिफ्थ फीचर, ठीक है दोस्तों। चलो बाय, राधे राधे।